the pedal. I set the tone, I don't settle. I can put fear in the devil. You are just not on my level. I keep my foot on the pedal. I set the tone, I don't settle. Hello to the fam, what is going on? Welcome back to another video. So here we have the old Duke 100 versus the new Duke 200. फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे वो है फर्स्ट डिफरेंस साइज़ का है। यहाँ पे साइज़ इसका बड़ा है, इसका थोड़ा छोटा है साइज़ अभी। अपार्ट फ्रॉम दैट द इंजन इसका BS4 इन कंप्लाइंट है, इसका BS6 कंप्लाइंट है। व्हेन यू कम नियर एंड सी इट, दिस इंजन राइट हियर, दिस इज अ BS6 कंप्लाइंट। व्हेन यू सी हियर इट इज रिटन, कम नियर टू इट, Duke BS6. तो दिस इज अ BS6 कंप्लाइंट। ऑन करो इसको भी, ऑन करो। लुक सिक। द डिफरेंस हेडलाइट देखो आप, इसका हेडलाइट अलग है, इसका हेडलाइट अलग है। यू सी दिस, दोनों के हेडलाइट्स अलग है, दोनों के हेडलाइट्स अलग अलग है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिकेटर्स तो सेम ही है। बहरहाल द इंडिकेटर्स आर सेम। दिस इज द एग्जॉस्ट। ये इंजन का साइज है। यहाँ पे एग्जॉस्ट था, एग्जॉस्ट का पाइप पहले अंदर से आता था। अभी जो न्यू एग्जॉस्ट है उसका यहाँ से अंदर से नहीं आके यहाँ से आ रहा पाइप, बाहर से आके इट इज कमिंग डाउन दिस साइड। नाउ दिस इज द एग्जॉस्ट ऑफ दिस व्हीकल। इसका पाइप कनेक्ट होते हैं, यहाँ से कनेक्ट होते हुए आ रहा है उसका पाइप यहाँ अंदर से, जहाँ से आप देख सकते हैं। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर जो है ABS मिसिंग है। एंड हियर यू कम टू दिस Duke 200 the new version. Here you find ABS on the wheel right here. This is the main difference between the Duke 200 new one and the old one. When you see this part for the old Duke, you see this? Louder than your girl last night. Okay, when you see this part in the old Duke, when you switch it on, the key that you put is here at this point. Here, everything is same right here. And when you come to the new Duke, for the same thing, you don't have it here. The switch, the keys, you have to put it here, and you switch it on. It is the same out here. Fully, it is the same. Now the final difference that we are going to see is the sound of the vehicle. So now we are going to listen to the sound of the old BS4 compliant Duke 200. So that is the sound of a BS4 compliant Duke 200. अभी हम लोग सुनने वाले हैं न्यू BS6 compliant Duke 200 की आवाज़। So this was the sound of a BS6। मतलब देखो, अद्दुबा क्या फीलिंग आ रही है बोलते को सुने बाद में इसका उसका फीलिंग क्या आ रही थी को वो बोलने को? भाई पुराने ड्यूक मौत है यार, पुरानी ड्यूक की आवाज़ भी मौत है। मगर अभी जो न्यू राइडर्स है जिसको ये लुक पसंद आया, इट्स वेरी मच स्मूथ। It is smooth. It is a lot smoother than the old Duke. और अभी emissions भी कम हो गए, pollution. It is smoother than the old Duke. Exactly. It is a lot smoother. और जो grunge आती थी वो grunge थोड़ी कम हो गई, मगर you will feel good after riding the Duke 200 as well. One more thing that I noticed, यहाँ पर कुछ भी branding नहीं है. And when you come to this part of the new KTM Duke 200, there is branding here. Logo यहाँ पे दिए and यहाँ पे दिए। जो यहाँ पर अपने को यहाँ पर आता था वो अपने को वहाँ पर आ रहा अब। And also the main difference for the new 200 is the design, which is bigger now. I'll ride this vehicle a little bit so that you understand कि what this vehicle will actually sound. मतलब इसमें आपको proper idea हो जाएगा, because this mic can capture loud, मतलब दूर तक भी इन्हें आवाज़ कैप्चर कर सकता। तो देखो भी आप लोग। So now this is how a BS4 would sound, and comparison देख लो आप लोग।
साउंड कंपैरिजन देख लो, दिस वर्सेस दिस नाउ, समझ में आ जाता है आप लोग को कि कौन सी बाइक मतलब आप प्रेफर करना चाहेंगे। वेल अगर साउंड को हटा देंगे तो आप यू कैन गो फॉर दिस वन। इफ यू वांट साउंड यू हैव टू बाय अ सेकंड हैंड ड्यूक 200 नाउ। ड्यूक 200 BS4, ड्यूक 200 BS6, RC390 BS4. So guys, that is it for the video. I am going to put more videos, drag race के videos. Apart from that, I am also going to put comparisons between these bikes, more जिसके इसके साथ और जो आने वाले हैं उसके बारे में भी डालने वाला हूँ मैं. Stay tuned for that. Subscribe, like this video so that it gets pushed away and promotes. Until then, be the change, be innovatable. Bye bye. Take care. See you for the very next video tomorrow. Bye.